सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। हमारा आज का टॉपिक डिस्कशन के लिए है ओपन सोर्स सीड्स मूवमेंट या इनिशिएटिव। हम देखेंगे ये न्यूज़ में क्यों है। ये रिलेटेड है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और पेटेंट राइट्स जो प्राइवेट कंपनीज रखती हैं। इसमें अगर इन शॉर्ट बात करेंगे तो जो सीड्स होते हैं, जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं, फार्मर इनका फर्दर यूज नहीं करता क्योंकि इस पे फिर राइट्स लग जाते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह लगते हैं। सो वी विल सी हाउ दीज आर प्रोटेक्टेड इन एग्रीकल्चर। देन ये फार्मर को कैसे इंपैक्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन है ओपन सोर्स सीड लाइसेंस। तो ये कैसे वर्क करता है, व्हाट इज दिस, इसके एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। आफ्टर दैट वी विल सी द वे फॉरवर्ड फॉर आवर कंट्री इंडिया। देन वी विल बी सॉल्विंग आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि बेस्ड होगा इसी वीडियो पे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाई न्यूज। सो फार्मर्स ने सेंचुरी से इनोवेशन किया है और शेयर करके विदाउट एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन्होंने नई वेराइटीज डेवलप की हैं। एंड anyhow they have never prevented others from innovating on the seeds. But however, with the emergence of the global IPR regime over the plant varieties also, there is a need for the open source seeds because ये limit करते हैं. And how are these protected? There are basically two major modes for this IPR protection in agriculture. First is the plant breeders right and the patents. In this regime, basically what happens that right holders or the private companies, they can demand the royalty on the seeds and also legally enforce these intellectual property rights. Moreover, in some nationals, they can also restrict the unauthorized use of the seeds to develop other new varieties. Now, together, they actually restrict farmers' right and also farmers' freedom to develop new varieties using the germ plas from the IP protected varieties. वो germ plas को protect कर देते हैं और farmer फिर उससे नई varieties नहीं बना सकता है. And this is how they have consolidated and dominated the seed sector by increasing the number of the plant varieties which are covered under these rights. And how do they impact the farmer then? सबसे पहले payment of royalties. हाइब्रिड सीड्स का जो राइट्स है, द कमर्शियल सीड इंडस्ट्री का राइट्स है एंड साइंटिफिक प्लांट ब्रीडिंग वगैरह भी, दिस हैज रिजल्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडर्स राइट एंड दैट राइट्स दे लिमिट द फार्मर्स राइट एंड आल्सो allowed rights holders to demand royalties on the seeds. There is restriction of unauthorized use. Farmer cannot use them without a proper authorization to develop new varieties using the seeds which are protected under these rights, which are okay. Then IPR, additionally, moreover, there is one more thing. There is a TRIPS program of this World Trade Organization. The TRIPS required countries to provide at least one form of IP protection. It is mandatory for it. Then there is dominance of private sector. Green revolution हुआ था तो वो public sector का initiative था and this is how it helped. And it was also open pollinated varieties were also available to the farmers. But जो genetic revolution है agriculture में, it is being led by the private sector. More seeds were made available as hybrids or protected by the strong IPRs, which limits the farmer's freedom to cultivate, reuse, and share those varieties. And there are two forms which we have already discussed, which are the parent plant breeders right and the patents. Now, this in turn has actually consolidated the seed industry. We have discussed it. For instance, in India, government had to intervene because of high prices of genetically modified seeds, which were the BT cotton seeds. इसीलिए गवर्नमेंट के भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे जीएम मस्टर्ड हो गया, पब्लिक सेक्टर में बीटी कॉटन सीड्स वगैरह का लाना हुआ ताकि फार्मर्स का थोड़ा इससे फायदा हो सके. नाउ लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इट इंस्पायर्ड अ सॉल्यूशन. इन 1999 एक प्लांट ब्रीडर है जिनका नाम था टीई मिशेल्स, suggested an approach to seed based on the principles of open source software. अब यहां से open source software रोल में आता है. So what is this? इसका जो aim है, it is to maintain open access to global plant genetic resources and also ensuring its accessibility to all the farmers, plant breeders, community, and for this generation and also for the generations to come. Actually, it affirms that the plant genetics और उनके जो physical traits हैं, they cannot and they should not be owned by individuals or corporation. क्योंकि जो plants हैं वो एक collective resource है, तो उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता उसके physical traits और genetics पर. In India,
the Center for Sustained Agriculture, which is Hyderabad, it has actually developed a open source model जिसमें एक agreement होता है सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और रिसेप्टेंट जो है सीड का उसके बीच में. What are the applications of this open source seed initiative or the movement? So it can be used in farmer-led seed conservation and distribution systems. There are many traditional varieties, conservation and sharing initiatives in India involving farmers. And it can also be used to promote farmer-led participatory plant breeding exercises. ये इसमें भी इंक्रीज करेगा ताकि फार्मर्स खुद से प्लांट ब्रीडिंग एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर सके आसानी से. ट्रेडिशनल वेराइटीज में ऑफन यूनिफॉर्मिटी नहीं होती या फिर उनमें कुछ अच्छी क्वालिटी नहीं होती है, तो ये जो ओपन सोर्स प्रिंसिपल है दे विल हेल्प टू ओवरकम दीज चैलेंजेस एंड दैट विल हेल्प बाय फैसिलिटेटिंग टेस्टिंग, इम्प्रोवाइजेशन एंड अडॉप्शन, क्योंकि इसमें न्यू वेराइटीज का फार्मर्स यूज कर सकते हैं नई बनाने के लिए. नाउ वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया. अंडर दिस प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन एंड फार्मर्स राइट एक्ट of 2001, farmers can basically register their varieties at the farmer varieties. इस नाम से वो register कर सकते हैं अगर वो certain conditions meet करते हैं. And also then they have the right to reuse, replant and exchange the seeds as well. लेकिन कुछ commercial जो crops हैं जो already इस act के अंदर protected हैं वो उनको breed और trade नहीं कर सकते. Using the open source approach here will actually enable the farmers to gain more rights over the germplasms, seeds and facilitate innovation. Open source principle can facilitate testing, improvisation, adoption, which means that all of which will ultimately be beneficial for India's food security and climate disease resilience. तो ये food security climate change से related एक topic था. Now prelims practice questions हम discuss करते हैं. So with reference to the Plant Variety Protection and Farmers Rights Act 2001, consider the following statement. It allows the farmers to register varieties as farmers varieties with the right to reuse, replant and exchange seeds. Second, farmers are not permitted to breed and sell varieties which are protected under the act of commercial purposes. Which of the above statements are correct? You can type the correct answer in the comment section. Second question is that with reference to the patent protection in India, consider the following statements. To get a patent, technical information about the invention must be disclosed to the public in a patent application. Patents given by Indian government are effective throughout the whole world. Which of the above statements are correct? You can type the answer in the comment section. There I'll let you know if it's correct or not. This was all about today's video and session. Hope you understood this. Thank you. Have a nice day. And if you're new to the channel, subscribe so you can get our notifications on it.